So it feels like कि शायद नहीं हुआ है. This is like a dream and maybe somebody will like wake me up and say कि भाई सपने से उठो. ऐसी फीलिंग आ रही है. गलत रिजल्ट देख लिया, तुम मजे कर रही हो, तो पता चले कि ये सब कुछ एक मतलब गलत है, धोखा है. Welcome to this session. My name is Apeksha, and today we have with us recently qualified chartered accountant, a best presenter awardee, public speaker, certified yoga practitioner. She's also educator at Unacademy and currently working in IILM University as assistant manager finance. Isha, thank you so much for joining in here and sharing your experience with us. Would you please give a brief about yourself to our listeners, like from where you are? First of all, namaste to all of you, and thank you so much, Apeksha, for having me here on your platform. Pleasure's all And mine. if I introduce myself, I've like qualified my CA exams recently. जो भी last exam का result आया था उसमें. I'm a trained Kathak dancer and I'm also a public speaker. I've been an active participant of all the conferences of ICAI. I've been the national level talent hunt elocution contest winner and was awarded a cash prize of 11,000 rupees by ICAI. Along with that, I'm currently working with the university called IILM as assistant manager finance. I have my own YouTube channel as well. So if you guys are not aware about it, do search YouTube page Isha Verma, and the first Subscribe to the recommendation, channel. whatever you get, that will be surely mine. Yes. So I think that's all about me for now. And later on in the video, we can discuss a little more about everything. Correct, Isha. Right. So you have a YouTube channel, as you said, where you talk about events taken at the CA Students Conference, and you kind of promote this thing among CA students. Tell them as to why a student who is totally new to this concept shall enroll, attend, or participant in such events, and what all things does it includes? Okay. Uh, so to be honest, I basically promote these events because they have helped me personally. I've always been very shy, timid, introvert. I never talk to person usually when I meet for them for the first time. Till now, that's in me. That's a habit in me. कि अगर आप मुझसे हाथों हाथ face to face मिलोगे, तो I will never speak to you आगे से खुद से आकर. Firstly, So I've yeah. been an introvert all yeah. I've been an introvert all these times. और हुआ क्या था कि इंट्रोवर्ट बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज योर बिहेवियर. ठीक है. एंड धीरे धीरे ये बिहेवियर मेरा कैरेक्टर बन गया. समझ रहे हो. आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ and that is the reason why I couldn't stand on the stage and speak to the audience. That was not my behavior, that was lack of confidence. तो जब मैंने इस चीज को समझा कि ये lack of confidence है, this is not my behavior, वो behavior से मैं अभी भी वैसी ही हूँ. दिखने में ऐसा लग रहा है कि I'm expressive, I talk a lot, I could just give interviews to anyone, I could talk to anyone, but that is not the case. If you still come to me personally and ask me how are you, I'll have the only thing to say I'm well. Even if nothing is well, I'm not the person who will share that out with you. Okay, so that is still the behavior is still and in Isha, me, I introvert think wala. कहीं ना कहीं I think it's related also to the CA studies that we do कि हम लोग बहुत bookish kind of हो जाते हैं and then we Exactly. become introverts. So when I started participating in these events, तो मैंने देखा कि मैं धीरे धीरे चेंज हो. जिस स्टेज से मुझे डर लगता था, जहां मुझे 10,000 ऑडियंस को देखकर बोलने में लगता था मैं कैसे बोलूंगी, या जिस स्टेज में पहले मैं कंटेंट भूल चुकी थी, फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि मैं पार्टिसिपेट करते 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 मैंने शायद उसकी आदत डाल ली, और फिर मुझे एंड में उस स्टेज से इतनी नर्वसनेस नहीं होने लगी. तो जब मैंने ये चेंज अपने अंदर देखा, देन आई रियलाइज कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था. देयर वाज नो बडी टू टेल मी, Isha, go for this conference and how you should participate, what should be the pattern to give your presentation, your audition videos. And जब मैंने इस चीज का lack of
support देखा, then I decided कि I will be that support for all the CA students. And with that motive, I started my YouTube channel, and thankfully, it's now a strong family of 8,000 subscribers. Yeah, that's And nice. similarly, I started writing on LinkedIn as well about events. That is why I'll always support ICI and the events कि आप जाओ उसमें participate करो, चाहे volunteer करो, चाहे MOC करो, stage पे कुछ भी करो, लेकिन just go for it and just try, give it your chance. राइट ईशा, वो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है जो हम में कहीं ना कहीं लैक होता Exactly. है कहीं ना कहीं. या सो ईशा, आई एम ऑल्सो अवेयर दैट यू हैव क्लियर्ड both the groups of CA final, and you have also been helping students out there through your YouTube channel regarding the same, right? So what strategy according to you one must follow to clear CA final subject? Yeah. The first thing would be never to, have that blind faith on any teacher. किसी भी सीए फाइनल टीचर पे आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है कि अगर आपने इनकी क्लासेस ले ली तो आपने सब पढ़ लिया. अब किसी ने कहा कि नहीं आप उनसे क्लासेस ले लो तो आपको सब आ जाएगा, तो आप स्विच कर जाते हो, आप उनसे क्लासेस लेने लग जाते हो. फिर आपके मन में चीजें रह जाती है कि शायद उनसे ही लेना चाहिए था. आपने जिनकी भी क्लासेस ली है उसको ले लो, उसके बाद खुद से सेल्फ स्टडी करो. और जितनी हो सके, द की टू सक्सेस of CA final is a lot of self study especially from the study material of ICI. तो आप ICI के स्टडी मटेरियल को रेपिटेडली पढ़ो. ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ क्वेश्चन सारे उन ICI मटेरियल के ही करो, उसके अलावा कुछ मत करो. द पॉइंट इज आपने जो भी पढ़ा उसको एक बार ICI मटेरियल से मैच करो कि क्या वो चीजें उधर है, क्या ICI का कोई मटेरियल का टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा. अगर नहीं ऐसा कोई टॉपिक है, just go through it once or twice, and the key is your study material. Trust me. ना आपको स्टडी मटेरियल से डबल पढ़ना है, ना ही आपको स्टडी मटेरियल से कम पढ़ना है. द बैलेंस इज योर स्टडी मटेरियल. आप स्टडी मटेरियल उठाओ, उसको मैच करो एंड पढ़ते जाओ. ये भी नहीं कि आप उससे डबल नॉलेज, थोड़ा ऊपर लेना जरूरी है, बट डबल लेने की भी जरूरत नहीं है. सो माई आइडिया हैज ऑलवेज बीन कि भाई पहला मोटिव है स्टडी मटेरियल. सो आई इवन फेल्ड इन वन ऑफ द अटेम्प्ट्स 9 नवंबर 22 में. तो उसमें मैंने यही गलती करी, मैंने यही गलती ही करी थी. ठीक है, मई 22 में आई क्लियर्ड माय फर्स्ट ग्रुप. द ओनली बेसिक वाज स्टडी मटेरियल पढ़ा था. नवंबर 22 में मैंने स्टडी मटेरियल को इग्नोर मारा था क्योंकि सब्जेक्ट्स क्या थे, डीटी आईडीटी. तो मुझे लगा डीटी आईडीटी के लिए स्टडी मटेरियल वुड नेवर बी इनफ. बट मैंने फिर मई 23 के लिए सिर्फ स्टडी मटेरियल फॉलो किया, डीटी आईडीटी सारे सब्जेक्ट्स का, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का, एंड आई डिड स्कोर वेल इनफ टू क्लियर इट. Keeping in the mind that I only did self study and also I had limited time for और ईशा, my studies. इवन जैसे हम सब अवेयर है कि बहुत सारा वास्ट पोर्शन होता है, तो इवन इफ वी डू फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल, तो क्या आपने वो समराइज किया था किसी फॉर्म में कि हम एग्जाम के पहले उतना करके जाए तो इनफ होगा? Topics थे. I had all the one page summary of important chapters. जैसे अगर इंडेस कोई है, इंडेस 2 है, तो इंडेस 2 आपको इतने सारे, उसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे. कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक है जो आपको वन टाइम करना है और सेकंड टाइम शायद नहीं भी करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स है जहाँ पे मैं अटक जाती हूँ. तो मैं क्या करती थी, एक पेज में इंडेस 2 के सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को ऊपर में, और क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन में मैं कहाँ अटकी थी और क्यों अटकी थी, रीजन, सेल्फ एनालिसिस. and I actually went on the yes and actually went on the conceptual clarity. Instead of doing thousands of questions, I try to have that conceptual clarity कि भाई क्यों हुआ ये, rather than क्यों नहीं हुआ, कितना किया और सब में हुआ या कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं. एक क्वेश्चन किया, उसमें वो चीज क्यों हुआ उसको जाना, एंड देन आई मेड सेल्फ नोट्स फॉर माय रिविजन. एंड यही वन पेज समरी को मैंने एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज किया था. Correct, Isha. Wonderful. So I've also recently came across that you have collaborated with Unacademy, which is a brilliant study platform for so many students out there. I remember watching videos where जो मुझे भी काफी हेल्प किया था उसमें सीए के एग्जाम के लिए. ईशा, how did you get into Unacademy and what are the subjects जो आप वहाँ पे टीच करने वाले हो या टीच करते हो? Trust me, I myself never knew कि Unacademy CA students को भी hire करता है.
I was the first person from the entire CA community, the first student to be on Unacademy as an educator. And I think that is one of the greatest achievements. मैं जिसके बारे में सबको बता सकती हूँ कि मैंने as a student Unacademy पे teacher की तरह काम किया है. Exactly. I have been teaching strategic management for CA Inter there, and along with that, I keep on posting videos for personality development, mainly on soft skills, speaking skills, stage fear, and all these topics. So, strategic management, some of the like technical topics, and then all the soft skills topics. जो मेरे अंदर है वो ज़्यादा बताया. ओके तो वहां पे हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है आई थिंक अनअकैडमी में अगर सारे लेक्चर्स चाहिए हो तो, या फिर इट्स अवेलेबल फ्री? अनअकैडमी पे आप Unacademy platform पे it's available, and on Unacademy YouTube channel also, if you search Isha Verma Unacademy, there's a whole list of playlists made there. So मेरी जितनी videos है सब उधर बनी हुई है. So if you want to watch it, you can watch it there. Okay. Great. So when you are creating content, Isha, there is not always a positive and a goody side to it. You sometimes get comments which are harsh, negative, inappropriate in a manner that, there is no way but to deal with it. So there may be negative comments that you as well might be facing. How do you deal with them, or what's your strategy to it? Okay. So even today, if I read a comment which is not in a good sense or negative, so I do feel bad. I do feel stuck for some while, and then I had to say to myself, "छोड़ो लोग तो कुछ कहेंगे ही, कहते ही लोगों का रहेंगे." काम है कहना. So that is how I deal with it. मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड हाँ 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए I feel it here कि भाई क्यों बोल के जा रहे हैं, अच्छी खासी वीडियो है, क्यों बोल के जा रहे हैं, then like छोड़ो बोलते रहेंगे, इनका क्या है. So if they do not find flaws in your talent, they will try to pull you down on the basis of your looks. So I basically get most of the negative comments based on my looks. क्योंकि talent में ऐसी कोई कमी है नहीं, मतलब ठीक है, तो देख रहा है कि वो इसको कहाँ से पुल डाउन करे, इसको किस वजह से रोके, ठीक है, पढ़ भी रही है, कर रही है भाई, तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो लुक्स की वजह से pull her down. So that is the most hated comments I usually get, but I like, ठीक है, जाओ जो करता है किसी को करते रहो. Yeah, right. Isha, I've seen that you appeared in Prime News Channel on this International Yoga Day, and you are also Yogacharya, that is teacher of yoga. So how does yoga, according to you, help professionals or students, especially those who are into competitive studies like chartered accountancy? So I've heard the saying called, if things are not working out, you should work out. Okay. So that is what I follow. If you are studying continuously for 5 hours, 6 hours, तो आपको break, जो best break होगा आपके लिए वो है कि just go and work out somehow. आप gym जाओ, आप yoga करो, आप dance करो, whatever form of exercise you want to opt for, you should go for. And what happened for me, I've always been practicing yoga for several years. बीच में मुझे डेंगू हो गया था, and that is why I was in hospital, I was in ICU. So when I recovered, I gained a lot of weight. So इस weight gain की वजह से, and also CA finals के exams भी थे back to back, तो इसके बीच में मुझे योगा ने बहुत help किया to have that mental stability, physical healthy जो होना होता है वो, that is what yoga gave me. So I will always say कि आप 15 मिनट ही सही, there's so many options, there's so many videos available on YouTube as well, जो 15 minutes में आपको योगा, कुछ ऐसे important योगा आपको आसन्स बताएंगे, that if you do for just 15 minutes a day and just do it for 15 days continuously, तो 15th day पे you will find a difference in your body automatically. You are able to breathe in a better way, you are able to digest your food. So basically क्या होता है कि आप दिन भर बैठ के पढ़ाई करते हो, तो most प्रॉब्लमेटिक थिंग इज डाइजेशन. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज आप वर्कआउट नहीं करते, पूरे दिन बैठ के पढ़ते हैं. सो इफ यू प्रैक्टिसिंग योगा फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, और 20 मिनट्स तो यार कोई भी निकाल सकता है. आप कहोगे कि टाइम नहीं है आपके पास, तो ये हो ही नहीं सकता. 20 मिनट्स आप वेब सीरीज देख लोगे, इधर उधर घूम लोगे, यूट्यूब रील देख लोगे, इंस्टाग्राम पे वो सारी चीजें कर लोगे.
Exactly. So we do that for 15 to 20 minutes for 15-20 days. And I bet you 20th day पे you will feel कि भाई है एक चीज difference है अपने अंदर. So that is why I think I will never like leave the hands of yoga ever. ओके ओके, यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस खत्म होते हैं बेसिकली. सो ईशा, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू, and I'm sure this is going to be very helpful to our viewers watching this podcast. Thank you so much once again, Isha. I Thank really you. had a good time. Thank you. Thank you so much. Yeah. Bye bye, everyone. Bye. Also, guys, we decided to record this podcast when I was just a student, and Right. हुआ क्या कि एक दो बार हमने postpone कर दिया, and ultimately तब record किया जब I'm finally a chartered accountant. So I feel very blessed कि भाई ये रुका ही इसीलिए था शायद Yeah. कि अगला मैं इंटरव्यू में ऐसा एक्चुअली सीए ही दूँ. हाँ, मैं एक्चुअली ईशा बताने पूछने भी वाली थी यार, आपने अब तक अपना बायो नहीं चेंज किया, सीए फाइनल स्टूडेंट ही है अभी भी. चेंज कर दो उसको. अच्छा करती हूँ. बट इट्स ग्रेट, आई मीन हम लोग जब लिटरली हम लोग बात कर रहे थे तभी आपका स्टे बायो वाज सीए फाइनल स्टूडेंट, एंड अभी एग्जैक्टली एक दिन, मतलब वन डे मेक्स, मतलब कितना डिफरेंस करता है. Just one day. या. Okay, थैंक यू. guys, it's time to say bye bye. And या. also, please subscribe to Apeksha's channel and Oh, mine too thank if you you. haven't already. Okay, Yeah. bye. Bye. Bye-bye.